مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ladies and gentlemen, COVID-19 has brought an unprecedented disruption all over the globe. It has brought many adversities with few positives. When we talk about the adversities, we mainly talk about two things: lives and livelihoods. With respect to livelihoods, the global economy has suffered trillions of dollars of losses. Millions of people are unemployed and thousands of businesses are shut down. With respect to lives, COVID-19 has so far claimed more than 500,000 lives, and the number of infected people has crossed the mark of 10 million people. So this loss of life, loss of livelihoods, and the lockdown all have created an environment of fear and uncertainty, which are the main reasons for the stress. So today our panel will be discussing how we can cope up with the stress. Today's panel will be moderated by Mr. Faraz Aslam, who is the head of HR at Siemens Pakistan. Our panel for today's include Mr. Suez Zindani, founder Learning Minds. Then we have Dr. Aisha Sanobar. She is adult and pediatric. She is consultant at adult and pediatric psychiatry. And lastly, we have Dr. Ifa Zafar Agha. She is the co-founder and COO of Sehat Khan. So before I invite Chairman PIBC, Mr. Khalid Rahman, for his welcome note, I would like to give you a brief over the format of the program. First, we will have a welcome note by the Chairman PIBC, which will be followed by a panel discussion. Then I'll ask few questions from Mr. Then I will ask few questions with Mr. Faraz Aslam. Thereafter, we'll have a Q&A session. In Q&A session, you can post your questions in at Facebook live comments, and you can also post your comments at Zoom Q&A box. Thereafter, the session will be summarized by the moderator, and I will conclude the things. Lastly and finally, there will be concluding remarks. So now I would like to invite Mr. Khalid Rahman, Chairman PIBC, for his welcome note. Over to you, sir. Thank you very much, Shoaib. An extremely informative introduction. Thank you once again. In the beginning, I would like to place our deepest appreciation for your good work on single-handedly dealing with this and putting up this webinar. So thank you very much, Shoaib. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. A very good evening and welcome to the 5th webinar being hosted by the Professional Accountants and Business Committee of ICAP, which is done in collaboration with our committees, the Northern and the Southern Regional Committees. A little bit of introduction about the Professional Accountants and Business Committee of ICAP. Around 80% of the ICAP total membership comprise of professional accountants and business. The Professional Accountants and Business Committee was formed with a mandate to facilitate a communication and sharing of knowledge and to provide a platform for focused training and development to all the members who are in business. Excuse me. Accordingly, a number of initiatives have been taken by the committee, and the prominent ones are the CFO conference, which is a signature event of the Professional Accountants and Business Committee. It's an annual event, but unfortunately, it had to be postponed this year due to COVID-19, and we are suffering from the stress because of not having this conference, and I'm sure we'll be relieved after this seminar, and we'll be able to deal with all the stress that we have to go through of doing all the work and not getting any results. But we do plan to hold this event when the situation permits. The other major event of the Professional Accountants Business Committee is the National Finance Olympiad. It is an annual event which is done with the support of Unilever. It is based on a competition of the chartered accountants among themselves, testing the knowledge and their presentation skills
and then selecting, it's a team-based approach and selecting the best stream. It has been a very, very participative and successful event of the Professional Accountants Business Committee. We have issued industry-specific guidelines for E&P sector, textiles, power, and pharmaceutical. Also, we have a mentorship program to support our young chartered accountants on career and personal development, and to provide them guidance on how they could progress as far as their work life and other issues that they confront while working in a challenging environment. And now we have started a series of webinars. As I said, this is our 5th webinar in the COVID serial. So far, our webinars have been on Pakistan economy, business transformation, leadership perspective on organizational resilience, surviving the crisis in oil and gas sector. And our today's webinar, and a very appropriate one, is dedicated to how to cope with stress during pandemic. This is a very relevant topic as we all are and continue to manage stress of different dimensions. I think this is just the beginning. It will be a major aftermath of the effects of the COVID in terms of employment, in terms of personal, in terms of illnesses, in terms of loss of lives, and so on and so forth. So I think it's a very, very relevant topic for us and for our members, and I'm sure they'll benefit out of it. We are deeply honored with the presence of a highly distinguished panel comprising of Mr. Suhail Zindani, who is the founder Learning Minds. He has a very impressive profile, and we have his profile on our website, and I'm sure you'll all look at it. He is inspirational. He teaches us a lot of things in terms of management of our minds. Dr. Ifat Zafaragha, who is a co-founder and CEO of Sehat Kahani. Thank you very much, Dr. Ifat, for being with us today. Excuse me. Then we have Dr. Aisha Sanober Chacha. She is adult and pediatric psychiatrist at AKU. And last but not least, our moderator, Mr. Faraz Aslam, who is head of HR Siemens. I'm thankful to each one of them to have accepted our invitation and to have agreed to share the knowledge and wisdom in this webinar for the benefit of ICAP members. A very big thank you to all our panelists on behalf of PAIB Committee of ICAP. The PIB committee published a post-webinar paper after each webinar. These publications are available on PAIB committee website. We will also be publishing a paper for this webinar, and our panelists will be requested to respond to a few questions which possibly will not be answered during this webinar due to paucity of time. I'm sure that our panelists will cooperate. It's a very good document. It actually sums up, or it gives the entire proceedings of the webinar, and it is a good reference document for us to all look at. We have a highly dedicated team of volunteers from the PIB committee, the regional committees, duly supported by ICAP staff organizing these webinars. The host of today's webinar is Shoaib Akhtar, who I've thanked already in the beginning. He has been ably supported by Fuad Aftab, Rauf Ali Jan, Sayyid Muhyiddin, Murtaza Feroz, Amir Shaukat Hussain, Asad Feroz, Amber Anwar, Imran Hafiz, Adnan Usmani, Arsalan Rabbani, and Shanawaz Abro. I'm thankful to each one of them for their time and effort and for making this webinar serial a success. The PIB committee will be holding webinars regularly as we have been holding in the past.
We have 2 more webinars planned during this month. Pharmaceutical and healthcare webinars will be held on Friday, 10th July and 24th July, respectively. And then it will be followed by a webinar on the power sector on the 7th of August. Lastly, I would like to thank President ICAP, Mr. Khalilullah Sheikh, who was supposed to deliver the keynote address today, but unfortunately, due to work exigencies, yeah, he called me up at the last moment to regret, and he has extended his regrets to all of you that he was not able to attend. So I've stepped in on his behalf. I'm also grateful to my council members for their guidance, support, and encouragement. May bless you all and keep you safe and healthy. And I hope we have an insightful and good webinar because we've got the best available. And over to you, Shoaib. Now I would request Mr. Faraz Aslam to begin the webinar from. Thank you very much, Shoaib. And I think a very elaborated introduction and a great, I would say, start by Khalid Saab. And I really appreciate the overall effort by ICAP. It's really professional. And I think in these times, especially I will go back to the start of 2020. And I clearly remember that when we were entering into 2020, so we all were talking about digitalization and digital world and, you know, like Internet of Things, IoT world, and how can we benefit from that and everything. VUCA world, you know, volatile and, you know, all sorts of volatilities were there. But then here we are. All of that, frankly speaking, for last 2.5, 3 months, I have never heard of all those jargons, terminologies, and or let's say emphasis like digitalization, Internet of Things. So that is a thing of the past. I shouldn't say that, or maybe a thing of future. But right now, here we are, pandemic, COVID-19. The COVID is 19, but it has happened in 2020. I'm not sure what is the link. Maybe my fellow panelists like Dr. Rifat and Sohail and or maybe, you know, other colleagues can, you know, quickly have a word on that. But let me begin my, let's say, the overall discussion and or panel discussion precisely with the panelists. And of course, it's such a pleasure for me to have these seasoned professionals. And when I look at the list of questions, which I have actually been thinking around, so of course, first question comes to the mind in context to the stress that we were already in a stressed environment. And the modern world has its own challenges, fast-paced life, and very demanding workplace, occupational, I would say, demands and everything. But I would like to pose my first question to Dr. Aisha, who is a psychiatrist herself. That Dr. Aisha, can you kindly tell us what is stress? Because normally we hear this term, and I'm not sure how many people really know what stress is. And how do we define stress? So I would like to have a word from Dr. Aisha. Can you hear me? Yes, okay, I can hear you. Assalamualaikum. First of all, thank you so much and congratulations to the entire ICAP team for organizing this webinar. I think बहुत ज़्यादा timely है. And like it's not just pandemic, but there's also something called infodemic, जो कि हर किस्म की गलत जो अफवाहें हैं not just pandemic or related, yes, stress related. Uske baad, I think considering that this is an excellent for arranging this. You were saying something for us, or can I continue? Yeah, please continue because there was a disruption for a little while, but now we can hear you. चलिए ठीक है, okay. So आपका जो सवाल
आपने मुझसे पूछा कि स्ट्रेस होता है डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेस हर किसी पे जो फिट हो सके. Exactly. So it seems that we have some problem, Dr. Aisha, with your connection. In terms of I think we have issues with your connection, Dr. Aisha. right. So yeah, maybe we can come back to you, and let me, for example, now move this question to Dr. Ifat. So, and once we have the connection stability with Dr. Aisha, we can go back to her. But for the moment, let's go ahead with Dr. Ifat. So, Dr. Ifat, can you kindly enlighten us? What is your, let's say, understanding or experience with stress? What it is? Hello, good evening. First of all, thank you so much for having us on board. I think stress, mental health is something which is very important, and with this pandemic, it has become all the more important. I think stress अभी current situation में हम सब relate करेंगे इस चीज़ से कि it has a lot to do with how our lives have completely changed. So I think there's a lot of anxiety around कितनी दफ़ा हाथ धोना है, सैनिटाइजर लगाना है, घर से बाहर चले गए हैं. You know, even very late. For me, stress is all of this. कि मैं अगर बाहर चली भी गई हूँ and if I come back home, I am not comfortable in picking up my children. I have this fear कि नहीं बच्चों को लग जाएगा. Or for example, it's been more than 3 or 4 months. My children haven't gone out of the house. And while because they're probably okay with all of this, it has really stressed me out क्योंकि मुझे as a parent लगता है कि इनके लिए मैं क्या activities या opportunities कर सकती हूँ at home. So I think as a mother, I'm always on the toes and I'm always looking कि how can I maximize their time at home. So stress is all of this. And then I think that social element and that angle of us meeting people, going out, for example, going out to offices, having a cup of tea. So इतनी सिंपल चीजें कि किसी दोस्त के साथ बैठ के आपने चाय पी ली और आप नहीं कर सकते. अब आप कितनी जूम टीज पियेंगे, लाइक वेरी वेरी रेगुलर नॉर्मल टर्म्स. एंड आई थिंक एक चीज और जो मुझे लगता है हुई है वो ये हुई है कि हम वर्क लाइफ की डेफिनेशन भूल गए हैं. तो ऐसा लगता है कि वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि वी आर वर्किंग मोर देन अ रेगुलर ऑफिस डेज. वो आप ऑफिस से घर आते यू टेंड टू डिटैच. नाउ देयर इज नो डिटैचमेंट. सो and then I think it's a lot to do with screens. We all are having Zoom fatigue, I feel at times. We all are on Zoom or Microsoft Teams or those kind of meetings. And this all leads to a lot of, I don't know, fears, anxiety. Ab kal kya hoga? Kab ye khatam hoga? So to me, stress is all of this. Okay, thank you very much. And I think pretty much I believe that we are facing all of this. And even if we admit or not, even if we know it or not, but definitely these are the new stressors. So now with this, I will again go back and give it a try to Dr. Aisha if she's still around. And so I think again, maybe we can have a, let's say, psychiatric perspective. That if when a common person talks about stress, but how a professional looks at it. So Dr. Aisha, are you still there or? No, we don't hear from her. So Ifat, I'll then continue with you. But then again, I think now my next question, of course, is that when it comes to, the overall stress and how stress is created and how it can be identified. Do you have some, let's say, context over that? Or, you already mentioned that we are sitting in our homes and we cannot go out. This is something new with context to pandemic. But then, when we talk about our normal lives, how does stress affects you physically and emotionally? Is it only mental or it's physical as well? So medically, mental health has a lot of physical manifestations as well. हम इसको medical ज़बान में कहते हैं कि somatic symptoms आना. So for example, people tend to have a lot of cluster headaches,
बैक एक्स, नेक एक्स, हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है which even if they are going through mental health issues, they don't really realize that there are mental health issues that they're suffering from, because उनको जो complaints होती हैं वो बहुत ज़्यादा bodily aches and pains की होती हैं. तो वो तो एक चीज़ definitely होती है. Other indicators of stress or anxiety include, for example, constant change in the behavior. लोग जिन्हें normally नहीं गुस्सा आता, they tend to become more anxious or irritated, or there's a certain change in their persona or their personality. नींद का नहीं आना, for example, या ज़्यादा सोना. So these are all those indications which indicate an issue related with anxiety. So for example, people with anxiety tend to either lose sleep or they tend to sleep a lot. So these are a couple of indications which there are. इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि अगर वो लोग जो अपनी डे टू डे नॉर्मल फंक्शनल लाइफ ना मेंटेन कर सकें, so for example, people who start losing interest in their daily life, start dressing up really shabbily, are not interested in eating properly, parents are not able to take care of their children properly, they're not able to function, in short, that becomes a regular. So I think this is something which becomes very important for everyone to understand. So Okay, I think thank this you. is my perspective. I think Dr. Aisha is back. Yeah, So thank we you can very much. You Hi, you Siddharth. you actually you gave us, I would say, some technical background as well. Thank you very much, because I believe you are also a doctor, and so you could actually handle it well. But let me again go back to Dr. Aisha. Dr. Aisha, welcome back. And so we Thank were you. still actually in the middle of our, let's say, finding our way through stress, what exactly it is. So from the psychiatric perspective, what do you think when people, or let's say clients or patients, come to you? What is it that you perceive as stress? Dr. Aisha, can you hear Last me? time. जी जी Okay, जी. please. Can you all hear me? Yeah, please go ahead. हाँ. So sorry, ये जो technical glitch हुआ. Although I was all prepared, but this again is, I think, a great demonstration of stress during pandemic, when all of these things happen and you just do not expect those. So one of the sources of stress is this as well. बीच में थोड़ा सा मिस हुआ, but स्ट्रेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है. हर किसी को अपना स्ट्रेस डिफाइन करने के लिए उनको अपना जो है एक उनका क्या रेजर्वॉयर है, उनकी क्या कोपिंग स्किल्स हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है. सो हर किसी की डेफिनेशन स्ट्रेस की अपनी है. बट अगर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं इन दीज टाइम्स, पेंडेमिक की अगर टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए, दिस इज अ वेरी नॉर्मल रिएक्शन टू व्हाट इज हैपनिंग. कुछ पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, फियर है. ब्रीफली मैंने जो सुना, डॉक्टर इफत ने भी जैसे कहा, देयर इज कंसर्न अबाउट हेल्थ, देयर इज कंसर्न अबाउट आपसे किसी को लाइक बीमारी ना लग जाए, देयर इज कंसर्न अबाउट ले ऑफ, देयर इज कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक्स. आपको ये भी बहुत ज्यादा लाइक परेशानी है कि क्या पता लाइक लास्ट मंथ यू वर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, अगला जो महीना है हु नोज के नौकरी ही ना रहे. एंड इट्स नॉट जस्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं बिजनेस सेक्टर की, there's also a lot of uncertainty around health sector, जो कि फॉर एग्जांपल ट्रेनीज हैं जिनकी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट कर रहे थे. सो दिस सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट एवरीथिंग, जो ये स्ट्रेस, ये जो एक एंजाइटी है, ये दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. मसला तब I think, Dr. Aisha, you are still, or maybe your connection is not really working well. But anyhow, I think you have really summed up the topic around stress, that what really it is. And in the context of pandemic especially, there are new variables, or let's say there are new stressors. So with this, let me go जो है वो to डिसऑर्डर Suhail. नहीं है. Stress is a reaction to something that is. So Dr. Aisha, I believe we have trouble with this connection of yours, but let me move ahead.
And let me go to Sohail Zandani. And I'm sure, Sohail, you have, of course, a great interaction with the corporate world. And so if I ask you a very precise question in this backdrop, uh, do you really feel that our society or corporate sector really recognizes the stress, or they are not even aware what it is? Thank you, Faraz. I was desperately waiting for getting into the conversation, while at the same time enjoying the conversation that was happening. Talking about corporate sector, I have to be mindful because tomorrow morning again I have to go there. But I think the level of empathy that um, organizations have shown, it has been reasonably well. But that's I have this habit of taking a different perspective to things. हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमारे साथ अभी हो क्या रहा है. मैं जनरल कॉन्वर्सेशंस देखता हूँ तो people are talking about pandemic इसने mental health को बहुत तकलीफ पहुंचाया है. नहीं, ये mental health पहले से screwed up था, pandemic ने उसको expose किया है. It's somehow we have never learned to be in our company. हमें अपने साथ रहना आता ही नहीं था और ये एक्सपोज हो गया है ये बात. हम किसी तरह से भी सोशलाइज करके बाहर घूम के अपना एब्सोल्यूट बोरिंग नेचर, अब इस वक्त प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये हुआ है ना कि अब हम अपनी कंपनी में, एंड आई थिंक अगर हमारी अपनी कंपनी बहुत बोरिंग है तो ऑफ कोर्स हम बोर होंगे. बट आई थिंक इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा मैं इनहांस करना चाहूंगा यहाँ पे, जिसको हम स्ट्रेस के कन्वर्सेशन में देख रहे हैं. देखिए, हम लोगों की जितनी तालीम, हम पढ़ लिख के आ जाते हैं, हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, हमारी सारी तालीम होती है, हमारा सारा पर्सपेक्टिव सेटिंग होती है ऑफ मैनेजिंग द आउटर वर्ल्ड. In our schools, in our colleges, in our universities, we are not trained, we are not even talked with for managing our inner world. And I think this is a flaw. This is an absolute level of flaw which is there in our education system, the way we are nurtured, the way we are developed, जो अभी सिर्फ एक्सपोज हो रहा है. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसकी रेलेवेंस ढूंढना, आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है इन इटसेल्फ, ये भी एक तरीके का एक आउटर प्लेटफॉर्म ही है ना, जो इन सारी चीजों से गुजरता हुआ आता है, वो यहाँ पे आके एग्जैजरेट हो जाता है. अभी 2 दिन पहले आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर माय क्लाइंट और उसमें किसी ने कहा कि सुहेल देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. मैं कहा नो, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, देयर इज ओनली पेंडेमिक. यू आर टॉपिंग इट अप विद डिप्रेशन. लेट्स बी सॉर्टेड. It's not that depression is in the bloody air and everyone is catching up depression. No, it's simply because of our inability to manage our own self that causes all this stress. See, I'll give you an example. एक बच्चा जब स्कूल, 2 बच्चों की हम एग्जांपल लेते हैं, ये जब स्कूल में एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो एक बच्चा एक्साइटेड होता है, एक बच्चा स्ट्रेस्ड होता है. एक्साइटेड वो होता है जो प्रिपेयर्ड हो, स्ट्रेस्ड वो होता है जो प्रिपेयर्ड नहीं हो. And I think हमारी preparedness in terms of dealing with ourselves, understanding ourselves, we have been so reliant. हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा सक्सेस, सब कुछ एक्सटर्नल रिलायंट है. आज फराज अगर मुझे सुन रहे हैं और आज अकेले बैठे हैं तो पूरा दिन उन फराज को बेचारे को जीत की या सक्सेस की फीलिंग ही नहीं आती. क्यों? क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं जिसे कंपीट करना है. कितना डिप्रेसिंग है. तो हमें बेस्ट सिखाया गया, बेटर नहीं सिखाया गया था कभी भी. सो आई थिंक इट हैज टू डू विद अ लॉट ऑफ, ये एक टाइम होना चाहिए. मुझे दुख, जो अब आपने फराज कॉर्पोरेट का कहा ना, मुझे जो दुख है वो ये है कि हमारे यहाँ हम सब वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द वेदर एंड नॉट लुकिंग एट द क्लाइमेट. एंड आई थिंक दिस इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग. हम लोग क्विक फिक्सेस कर रहे हैं. कॉर्पोरेट में आप देखें तो रोज सेशंस हो रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के. Stress is an outcome to a lot of inabilities, a lot of misunderstandings, and I think it's so good to see Dr. Aisha and Dr. Ifat here, because I think these people can add much more educated perspective to the conversation. Just not this pump up of motivation. We don't need motivation. We need perspective. We need to look things in the right way. And I think that's where the conversation should tilt. And I think that's where corporates are struggling, because what they are doing, who knows it better than you, Faraz, they've been using their tools. TNA करवा रहे हैं और TNA में लोग बता रहे हैं कि हम बड़े स्ट्रेस्ड हैं. अच्छा, आप स्ट्रेस्ड हैं, एक और स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन आपके लिए फ्री.
रिडिकुलस आइडिया, रिडिकुलस आइडिया। क्योंकि जिसने आज आपके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन लिया है वो 2 दिन पहले तक ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से खुद स्ट्रेस्ड आउट था। So let's be open about these conversations. We need more heartful, more holistic, more profound conversations around this subject. Wonderful. I think very interesting, Swail. You have actually opened the old discussion into a new paradigm. And I was actually waiting for this kind of a discussion because ये वो discussion है जो कि actually दिल से हो रही है ना. It is not that cosmetic discussion जैसे अभी आपने कहा कि वो ट्रेनर जो खुद स्ट्रेस था 2 दिन पहले, जब वो स्ट्रेस की बात करेगा तो वो कैसी बात करेगा, शायद वो ज्यादा कॉस्मेटिक होगी. सो ऑन दिस वेरी पॉइंट लेट मी आस्क यू अगेन, ऑफ कोर्स आपने बड़े क्लियरली बताया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो स्ट्रेस है दैट इज नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन पर्सनल लाइफ. आई पर्सनली बिलीव दैट यू हैव एब्सोल्युटली सेड इट. यू नो, इससे ज्यादा और क्या साफ बात कही जा सकती. However, I would also like to take your view. We hear about word occupational stress. You know, there is this term which is called work stress or occupational stress. And we know for sure that occupational stress has been thoroughly researched for last, let's say, 20, 30 years. And there are different variables of occupational stress. For example, there is job overload, there is, role clarity, and there is, role confusion. So these are topics which are related to like job insecurity, and then all of these topics. So would you like to have some, let's say, interesting points to share with us on this? This question is for me, right, Fraz? Yes, exactly. This is for you. Okay, yeah. So I'll just quickly put up thought again in a perspective. देखिए, ये जो हमारा world of work है, ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है. आज से 130 साल पहले दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? यहाँ पे बहुत सारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जूम पे भी हैं, फेसबुक पे हैं. जस्ट थिंक कितना था. हम कोई भी एस्टिमेट लगा सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ, आज से 130 साल पहले, 120 साल पहले दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 0%. 0%. नौकरियां नहीं थी, सब अपना काम करते थे, उगाते थे, खाते थे, मस्त लाइफ थी. फिर हेनरी फोर्ड साहब आते हैं और हेनरी फोर्ड कहते हैं कि देखें, मुझे फोर्ड मोटर कंपनी के लिए लोग चाहिए. आप बनाते हैं 50 सेंट ऑलमोस्ट, मैं आपको दूंगा $5 पर आवर. एंड दिस क्रिएटेड अ लाइफस्टाइल रेवोल्यूशन इन अमेरिका, व्हिच वी बीइंग द वर्ल्ड एट लार्ज क्विकली caught up to that. Okay, अब ये जो वर्क प्लेस जिसको हम इतना आज डेकोरेट कर दिया है, ये क्या है? आज क्यों ऑर्गेनाइजेशंस में ये बातें शुरू हो गई हैं, essential positions versus non-essential positions? What is, if a position was non-essential, why the hell you had that position on the first place anyways? That's my question. If a position was so non-essential, why you had that position? So I think this is not just a time to pass on. This is a time to take an audit. This is a time to see, are we moving in the right direction altogether? I think because this is a ICAP program, I think CFOs should now look at cost from a very different angle altogether. Is it worth it what we are doing? Because see, ये जो आज occupational stress आपने Fraz, I think that's a very important term to be discussed. और बहुत कम आज आप देखें जो हमारी conversation हो रही है उसमें occupational stress के ऊपर बात ही नहीं हो रही है. But I think occupational stress को again as a symptom, as an outcome चीज treat करेंगे, हम कभी इसको solve नहीं कर सकते. हमें इसको ये देखना पड़ेगा where it comes from. It comes from a poor design in itself. A design where individual thought process is categorically killed. Why Dr. Ifat had to start Syed Kahani? मैं आपको एक example देता हूँ. And Dr. Saib, I don't know you much, so my apologies. I know Syed Kahani and I know the work you people do. But माने डॉक्टर इफत काम कर रही होती किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि डॉक्टर इफत ने ये आइडिया देना था, लेकिन भाई वो इतने बिजी हैं अपनी दवाइयां बेचने में. दे वुड से डॉक्टर साहिबा आप रिलैक्स करें, ये अगले प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे काम करते हैं. इट्स अ ब्लडी स्क्रूड अप कल्चर. वी डोंट appreciate human intelligence, and at the same time we say human intelligence is our greatest asset. You are lying. You're a liar. And when people realize it, देखिए ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ना, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था. लोगों ने कहा था हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, अच्छी जिंदगी देंगे, रिटायर होने के बाद पेंशन देंगे, तुम चुपचाप अपना दिमाग घर पे पार्क करके आओ, जो बताया जाए वो करो और घर जाओ.
But with all this advent of information technology, people have access to much more information. People have access to much more possibility. And corporate sector in itself was dying. Corporate sector in itself was struggling. And now, therefore, is the challenge, is an opportunity to reinvent ourselves. To, rather than having bureaucracy, let's have humanocracy. Let's have humanocracy at our organizations. Let's make organizations truly human-centered. Because when an organization is human-centered, वर्क प्रेशर तभी भी होगा फराज, लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा, because stress happens for a thing that you are not emotionally involved with. If you are emotionally involved with, nothing can give you stress. ये डॉक्टर इफ़त हैं, डॉक्टर आयशा हैं, आप में से अगर मेरे सुनने वालों को किसी को लगता है कि इनकी जॉब स्ट्रेस नहीं है, you are drugged. It is stressed, but because it takes their emotional commitment, stress और पैशन में यही तो फर्क है. You are emotionally involved, and I think organizations need to work hard to emotionally involve their employees if they really want to move into future. That's my say. Thank you very much, Suhail. I think you again nailed it, and you have kind of given a new perspective about the old definitions of occupational stress, and I would say academic definitions only, because the real life, practical life, of course, is a little different from what we actually we read in books. And when we bring books into the perspective, then of course these books talk to us. And you have really given us this new perspective. So with this, let me go back to Dr. Ifat, because you mentioned that Sehat Kahani, we all know, but we don't know Dr. Ifat. Let's ask her, I would say, an interesting question, which is that Dr. Ifat, in what ways, because you are an entrepreneur, right? So in what ways stress, which has stemmed from pandemic, is affecting the entrepreneur's life? Yeah, so I think so very interesting conversation happening here. I think with the pandemic, जो एक सबसे बड़ा change आया है for entrepreneurs is twofold. अब इसमें depend करता है कि आपका business tech based था या tech based नहीं था, और for example उसकी physical interaction में कितनी dependence थी. तो I think for those entrepreneurs जिनकी companies की बहुत ज़्यादा physical interaction पे डिपेंडेंसी थी, आई थिंक दे ऑल आर ऑब्वियसली गो थ्रू अ बैड चैलेंजिंग टाइम. बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही हैं बहुत सारी कंपनी. आई थिंक बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें अपने मॉडल शिफ्ट करने पड़े हैं. आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, एयरलिफ्ट हैज़ चेंज देयर मॉडल इनटू अ डिलीवरी सर्विस नाउ. तो आई कैन रियली इमेजिन कि उन फाउंडर्स को कितने स्ट्रेस से गुजरना पड़ा होगा टू रियली अंडरस्टैंड, कन्फिगर एंड नेविगेट कि ठीक है यार, अब ये बिजनेस मॉडल नहीं काम कर रहा, इस वक्त ये पेंडेमिक है, how else can we survive and sustain in this time? Studies कह रही हैं बहुत सारी globally कि बहुत सारे ऐसे businesses हैं unfortunately जो कि survive नहीं कर पाएंगे इस pandemic में, और आप सबके सामने हैं ऐसी बहुत सारी services. For example, cafes, restaurants, they're all entrepreneurial stories, and unfortunately because of the pandemic बहुत सारी ऐसी इसमें से हैं जो कि we don't know if they will be able to survive after COVID or not. So this is one perspective for those entrepreneurs. But then कुछ मेरे जैसे entrepreneurs भी हैं जिनका actually कहते हैं ना आम जुबान में, जिनकी दुकान चमक गई है actually COVID की वजह से, fortunately for us. So बहुत सारे tech businesses ऐसे हैं who have really gained a lot of traction in this COVID crisis. तो I think depend ये करता है कि आप किस तरह से लेकर चल रहे हैं. But एक चीज़ जो मुझे या मैं कहना चाहूँगी, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप रेगुलर बिजनेस हो, हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इस वक्त. फॉर एग्जाम्पल, हम सबको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वॉज पॉसिबल, एंड फॉर ईयर्स एंड डेकेड्स वी ऑल वर रियली स्टबर्न अबाउट इट कि नहीं जी, वर्क फ्रॉम होम तो हो ही नहीं सकता. एंड आई फिनोमेना ग्लोबली एज वेल, बट पाकिस्तान में आई थिंक वी वर वेरी आई वुड से स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि नहीं जी, वर्क फ्रॉम होम तो हो नहीं सकता. तो ये एक तब्दीली आई है, मुझे लगता है. कहते हैं ना हर चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग होती है. मुझे बड़ी जो कोविड की सिल्वर लाइनिंग लगती है वो ये है कि हमने उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी.
And so I run a startup. I have a small office, but now we are speculating, did we even need to have this office? Did we really need to spend such a huge amount every month in the rent of the office? जब ये काम शायद और बेहतर तरीके से हो रहा है when we are working from home. So for those businesses who own big infrastructures, giant spaces, I think they must be having this question कि क्या हमें इतनी giant space की ज़रूरत भी है? So I think these are my takes on that कि ये कोविड क्राइसिस जहाँ बहुत सारी बुराइयां ला रहा है वहाँ आई थिंक हम सब बड़ा कुछ सीख के भी जाएंगे इधर से. Very interesting. Thank you very much, Dr. Ifat. I think being an entrepreneur, who could tell us better than the, let's say, challenges of an entrepreneur in this COVID-19 situation. And as you very rightly pointed out, कि health का जो है entrepreneur का या business, I think that's of course is something which is there. That business is there. Many businesses like transportation, like airlines and hotel industry, and so lots of businesses. So with this, I mean, I clearly see a point over there. But let me go back again to Sohail. So Sohail, if I ask you in this context, what Dr. Ifat just shared with us, what is your perspective, or let's say opinion, that which part of the society is most stressed due to pandemic? I mean, children, students, corporate workers, blue collar working class, startups, entrepreneurs, board CEOs, finance professionals. So in among this list of professionals, or let's say people, what is your view? You think that they actually have been hit most? Okay, I think anyone and everyone without capability of dealing with himself or herself is in crisis. Can be a child, can be a professional, can be a CEO. We all have pains and exposures of different levels altogether. Of course, if a prime minister of a country would also have stress, and my chowkidar would also have his own stress, and the stress should be directly proportional to the capability that the person have. So I give you an example, Faraz. If you get an opportunity to fly a plane without knowing how to fly it, you'll be freaked out. You'll be freaked out. Or if I ask you to operate over a patient without being a doctor or trained into that particular operation, you'll be freaked out. But if it's a doctor who does this operation every freaking day, that's not a matter of stress. That's just a matter of practicing capability. I think this is a time we all should be committed towards developing our own capability, not just our capability to deal with the outer world, which is very important, but also with our capability to do and deal with our inner world. मैंने भी जो थोड़ी देर पहले बात कही कि pandemic is enough, but there are few people who want to spice it up with depression. So मैं आपको these are amazing perspectives. I had a call from this person I met few years back at a training. He attended one of my Facebook session, got my number, called me back and said, Sohail, आपके सेशन सुनने के बाद मेरी जॉब चली गई थी, फिर मैंने आपका सेशन सुना, उससे मेरे को बड़ा फायदा हुआ. तो मैं कहा जबरदस्त, जॉब मिल गई? उसने कहा नहीं, जॉब नहीं मिली, मुझे जॉब बिल्कुल नहीं मिली, जॉब तो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे जॉब ना मिलने का दुख थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज यू जस्ट gave me a different perspective to look at things. कि एक तो जॉब नहीं है, मतलब एक तो तुम जॉबलेस हो, ऊपर से to spice it up डिप्रेस भी हो. How romantic. I think this attitude should go. So I think ये of course, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त बच्चे freaked out है. ऑनलाइन एजुकेशन बोलने में बहुत कूल लगता है, लेकिन फराज, आई एम श्योर बिकॉज यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, तो तुम्हारे लिए भी ये इतना ही इक्वली डिमांडिंग है कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं, बच्चे सुबह उनके साथ बैठना माओं के लिए कितना स्ट्रेसफुल जॉब है. आई एक्चुअली विटनेस इट एवरी फ्रीकिंग डे. सो इट्स विद ऑल लेयर्स. व्हाई? बिकॉज वी अभी डॉक्टर इफत ने बहुत अच्छी बात कही, वर्क फ्रॉम होम कितने सालों से डिस्कस हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लगे हुए थे ये समझाने में कि वर्क फ्रॉम होम तो हो ही नहीं सकता. और जो लोग हमें पिछले 30 साल से समझा रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, वो पिछले 3.5 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं.
प्रॉब्लम ये हुआ कि ये हमने embrace नहीं किया, हम पे ये मुसलत हुआ, और ये ह्यूमन नेचर है कि कोई चीज ख्वाह वो अच्छी ही क्यों ना हो, जब आप पे मुसलत होती है, when it gets imposed over you, you can never celebrate it, you can never enjoy it. But if it is something which is intentional, when it is conscious, you can enjoy the fruits of it. So I think this is a time where we as a society need to embrace this as a new normal. All sectors, all sectors. I've worked with doctors in this time, I worked with other paramedic staff, I worked with I recently worked with police, I've worked with corporates, I'm doing programs for students, teachers. We all have our share of stress, but I think people with capability to embrace their stress and beat it with improved capability. अभी हमारे साथ यहाँ शोएब है, शोएब अख्तर, ओके. शोएब मिसाल के तौर पे इनकी एक सर्टेन जॉब हो आईकैप में, मुझे एग्जैक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता, अब इसे वर्क फ्रॉम होम करना है, और इससे आइडिया ही नहीं था कि यू नो हाउ आई डू जूम एंड हाउ आई कोलैबोरेट एंड हाउ आई शेयर स्क्रीन एंड हाउ आई मेक ब्रेकआउट रूम्स. अब अगर ये इसे नहीं आता तो ये और स्ट्रेस्ड आउट होगा, लेकिन अगर ये इसे सीख लेता है, he'll be better off. So I think this is a time we should not waste our energies on creating more fuss. I think this is a time we should invest. ये फराज लोग कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले मेरे सेशन में किसी ने मुझे कहा था कि ये तो तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम बात कह रहे हो. मैं कहा अच्छा भाई, तो आप गरीबों की ये बात कह लें, बट कहें, बिकॉज आप गरीब हैं, ये आपको कोई स्टेटस राइट नहीं मिला कि अब आप डिप्रेस भी होंगे. ये इंसान को अल्लाह ने अमीर और गरीब को चॉइस नहीं दी. अमीर को अपने प्रॉब्लम्स है, गरीब को अपने प्रॉब्लम्स है. हम हर चीज में ये पैसा अमीर गरीब लगा के, we need to take charge of this part, because whoever is in control of this part is Amir in this time. It's capability time. वेरी इंटरेस्टिंग. सुहेल, आपने बड़ी आई थिंक बड़ी इंतहाई अहम बात की है. आपने एक जगह पे अपनी बात में कहा कि फॉर एग्जांपल बच्चों के हवाले से हम देखते हैं, बल्कि मैं अभी देख रहा था चैट में भी जो लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, एंड आई विल ऑफ कोर्स आस्क इट दिस, आई विल गिव इट अ ट्राई दैट डॉक्टर आयशा कैन हियर मी, एंड इफ शी कैन समहाउ आंसर दिस क्वेश्चन, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन. ये एक पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने मिर्जा मुआज, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि एंड हु देमसेल्व्स डू नॉट नो that they are stressed, and as we spend more time working from home, इस सूरत हाल में बच्चे जो हैं वो तो they are also working from home in one way or the other, because their life actually is more tedious. And when we talk with our kids, I mean a 5-year-old or maybe 7 years old or 12 years old, they all have to go online to take these classes. And so इस perspective में डॉक्टर आयशा, अगर आप, if you can hear me, kindly enlighten us that how this is identified among children, this stress. Okay, so I hope अब जो है सबको आवाज आ रही है, and मैंने अपनी वीडियो जो है, okay, perfect, great. So very interesting conversation. मैं पूरी conversation सुन रही हूँ, and it's very interesting to hear all of these perspectives. देखिए, अगर हम बच्चों की जब बात कर रहे होते हैं, तो इस point in time पे, although पेंडेमिक या डायरेक्ट कोई थ्रेट इस तरीके से नहीं है कि बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, पर उसकी वजह से जितने बुरे तरीके से बच्चे इग्नोर प्लस इफेक्ट हुए हैं, वो हम बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से बयान कर सकते. उसका जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ा है, नॉट जस्ट देखिए पढ़ाई, वेरी राइटली सेड, जैसे मिस्टर सुहेल सेड कि इतना ज्यादा जो फोकस है वो बेस्ट होने पे, सारा जो फोकस हम बचपन से आई थिंक बच्चा पैदा अस्पताल खोलेंगे, सो तब से ही डिसाइड हुआ होता है कि इनको आगे जाके क्या बनाना है, एंड एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट अपॉन उनके या तो ओ ए लेवल्स के ग्रेड्स या तो मैट्रिक या फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट्स पे. सो वो जो है चीजें सारी जो है वो मेस्ड अप हो गई हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग. आई होप अब आवाज क्लियर आ रही है, because I can also, ठीक है. so that is something जो कि बच्चों का तो स्ट्रेस है ही, पर उसके साथ साथ जो पेरेंटल इतनी सारी उम्मीदें जो जनरेशन की थी, वो भी जो है एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस बढ़ा हुआ है. सिग्निफिकेंट रिसर्च हुई भी है चाइल्ड मेंटल हेल्थ में कि बच्चे का जो स्ट्रेस है वो पेरेंटल स्ट्रेस से जो है वो सिंक हुआ होता है.
पेरेंट का स्ट्रेस जो है अगर उसको आप मैनेज करें तो बच्चों का स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली वो मैनेज हो सकता है. सो इट्स सो मच गोइंग ऑन कि बच्चे इस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं घर पे जो है. आई मीन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर एक्चुअली एंजॉयिंग घर की पढ़ाई, क्योंकि वो जो है वो टांग भी अपनी मर्जी से हिला सकते हैं और हिल भी सकते हैं और अपनी मर्जी से कुछ बीच में खा पी भी सक रहे हैं. बट देन देयर आर चिल्ड्रन हु आर कंप्लीटली लाइक क्लस्टर, क्योंकि उनकी सोशल लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है. प्लस जो है वो पेरेंट्स जो है अगर उनके घर में 5 बच्चे हैं तो वो 5 जो है वो डिवाइसेस नहीं अरेंज कर पा रहे हैं. सो ये इतने ज्यादा चीजें हैं. प्लस प्लस अगर कोई पेरेंट फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट जिनका टेम्परामेंटली डिफिकल्ट भी होते थे वो जॉब पे चले जाते थे तो एक टाइम मिल जाता था बच्चों को पेरेंट्स के बगैर घर पे. सो नाउ एवरीवन इज एट होम. पेरेंट्स का अलग स्ट्रेस है. जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में जो है वो सबका इनपुट जो है वो ज्यादा आ रहा है. सडनली सबकी पेरेंटिंग एडवाइस बढ़ गई है. बच्चे जो है अब जो है आई एम नॉट ट्राइंग टू से क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. अब पबजी जैसा जैसे व्हाटएवर इज हैपनिंग, सो वो एक अलग से जो है एक बैरियर आ गया है. सो ये सारी चीजें आर डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन. एंड देन फिर बात हो रही होती है कि देखें समवन ट्राई टू डाई बाय सुसाइड, लाइक कि अपने आप को जो है वो सुसाइड की कोशिश की है तो वो वीडियो गेम की वजह से हुआ है. वेरी 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 राइटली सेड अगेन कि गुर्बत जो है या यू नो मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर या कोई, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू पॉवर्टी. दिस इज नॉट इक्वलेंट टू के यू नो कोई लीनियर उसका पाथवे नहीं होता है. देयर आर सो मैनी मीडिएटिंग फैक्टर्स. जो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है ये जिस पे अगर हम बात करें, बट होता यही है कि जो चीज हाईलाइट जिस तरीके से मीडिया पे हो जाती है वो उसी को बिल्कुल लाइक वो ए टू बी पे जाना होता है. बस ये हुआ तो ये हुआ. वी जस्ट ट्राई टू होल्ड ऑन टू रीजंस कि अच्छा ये रीजन है ना इसकी वजह से ये हुआ है. बट वी completely overlook the complexities और nuances जो कि एक बच्चे को रेस करने में होती हैं, जो कि वैसे ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए. अब और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है. सो बच्चों का स्ट्रेस इज दैट. एंड नाउ आइडेंटिफाई जो है किस तरीके से कर सकते हैं, वो क्वेश्चन वाज नॉट वेरी क्लियर फॉर अस कि वो एडल्ट के पर्सपेक्टिव से था या बच्चों के पर्सपेक्टिव से था. आई थिंक आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हैंडल किया है. बट अगेन डॉक्टर आयशा, जो पर्सपेक्टिव का जो लोग जानना चाह रहे हैं वो दैट इज अबाउट चिल्ड्रन. एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ जो है दैट इज नॉट ओनली फॉर एडल्ट्स. ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस इज अबाउट चिल्ड्रन एज वेल. सो उस कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज या क्या हमारे पास जो है वो सम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक मेथड्स जो है अवेलेबल हैं और पेरेंट्स स्पेशली. एंड देन ऑफ कोर्स आई मीन ये जो सारी कॉन्वर्सेशन है ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये ख्याल है कि पेरेंट्स हैं दे आर मोर और लेस लाइक CEOs and or let's say the management of the house in one way or the other, and the same behavior, I'm sure the same knowledge or same tips are much needed for the management, because आज की management जो है वो भी ये जानना चाहती है कि हम इस सूरत हाल में how can we really ensure. तो पहला पार्ट मेरा जो क्वेश्चन का है वो तो ये है कि आप जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजीज क्या टिप्स जो हैं वो आपने कुछ ऑलरेडी पहले बातें की हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो टिप्स आप शेयर करना चाहें पेरेंट्स के लिए फॉर इंश्योरिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन. ओके. सो अगेन जैसे पहले भी मैंने कहा, दिस इज ऑल लाइक एविडेंस बेस्ड, वेरी वेरी वेल रोबस्ट एविडेंस बेस्ड कि पेरेंटल स्ट्रेस पर से, क्योंकि देखें आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन और हमारी ट्रेनिंग भी चाइल्ड मेंटल हेल्थ में ऐसी नहीं होती है कि चलो बच्चा आया रो रहा है ठक से दवा दे दी. That's completely not how things work in child mental health. There's a lot of significant data around how you manage parents का stress that will automatically help the child. So उस perspective से मैं कह रही थी. And then दूसरा perspective ये है कि बहुत ही ज्यादा हमें लगता है कि हम बच्चों से जो है बच्चों से बात करेंगे तो they will not understand. हम जब बात नहीं करते तो दे हेयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम टीवी, जो कि 24/7 आजकल चल रहा है घर पे, जिसमें पता चल रहा है कि इतने लोग जो है दे डाइंग ऑफ कोविड, इतने सो XYZ. So they're getting all of these things. They're looking at their old, grandmother, grandparents. They're looking at their parents not staying at home. They have all sorts of these questions that they have, but they are not addressed.
उनसे अगर कोई सवाल पूछता भी है कि कोई मर जाएगा, तो सडनली हम कहते हैं कि तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात कर रहे हो, अल्लाह ना करे कोई नहीं मरेगा, तो उसको उसी टाइम पे ही ना शट डाउन किया जाता है. So addressing their concerns, उनके questions in a very healthy way, सोचने से कुछ भी नहीं होता, कहने से किसी को कुछ भी नहीं हो जाता. So I think ये एक myth है, and that we need to address, and we need to answer, listen to them and answer to their questions. जितना हो सके ये जो आपकी news related ये जो information है उसको limit करें. And there's a lot of जो के blame game घर पे हो रहा है कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है. So please try to limit that. Parents need to relax. ये again हमारे लिए बहुत इजी है ये कहना कि ले लो उनसे स्क्रीन आप लेके क्या रिप्लेस कर रहे हो. दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि आपने उनसे मोबाइल तो ले लिया, बट देन मोबाइल लेने के बाद क्या, आओ हमारे सामने बैठो और फिर कोई बात करो तो फिर हम डांटें कि लाइक ये क्या बात कर रहे हो, ऐसी इस तरीके से बात नहीं करते. So you really have to structure it in a way कि बच्चा भी परेशान है, बच्चे की भी परेशानी आप समझें. अगर आप let's say पेंडेमिक से पहले 2 घंटे स्क्रीन देते थे और इस टाइम पे अगर आपको 3 घंटे देना पड़ रहा है, तो इट्स ओके. These are not usual times. There are things जो आपको थोड़ा सा lenient होना पड़ेगा, but then there are also things जो आपको अपनी comfort zone as a parent उससे बाहर जाना होगा. स्लीप वेक साइकिल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. छुट्टियां नहीं है ये कोई ऐसा हॉलीडे नहीं है जिसमें बच्चों को लाइक 4 बजे तक अगर जाग रहे हैं तो इट्स ओके. सो रूटीन जितना हो सके उसको जो है वो आप वैसे ही रखें जैसे पहले, बट उसके लिए आपको एज एन एडल्ट भी अपना रूटीन ठीक करना होगा. सो these are just very basic things that are important for child mental health, and I'm talking about general population. Yeah. Okay. Indeed. So again, Dr. Asha, thank you very much. I think you have really brought a new perspective. कि बच्चे जो हैं वो of course उनका एक अपना stress environment है, और we have to recognize and we have to kind of help them, support them to deal with it and manage it. With this, I'll come to Sohail. Sohail, I think एक बड़ा ही pertinent question इस वक्त मैं लगता है मुझे कि सारी conversation को आगे बढ़ाने के लिए. What is your overall take on this entire pandemic scene, and what coping mechanisms you suggest? Because we are talking about now strategies and different coping mechanisms. So in your perspective, आपका क्या ख्याल है कि क्या 2, 3, 4 ऐसी strategies या tips आप समझते हैं कि जो लोगों को फायदा दे सकते हैं out of this conversation? Okay, so Faraz, I'm not known for tips. I think I will take a rather different route to this. And what is that? I think this is a time to be more mindful and conscious. It's a time to be more subjective towards life. This is a time to build perspectives. Abhi Dr. Aisha ने एक बात कही regarding screen times, और मुझे एक दफा एक शख्स मिले, मुझे कहते हैं अगर मेरी जिंदगी में मुझे मेरे बच्चों को स्क्रीन देनी पड़ी तो मैं पता नहीं अपने साथ क्या कर लूंगा. मैं कब से उसका नंबर ढूंढ रहा हूँ कि उससे फोन करके पूछूं कि आजकल क्या चल रहा है आपके यहाँ. आई थिंक बच्चों को ये कहना कि आप स्क्रीन यूज ना करें, दिस इज सच अ बोरिंग आइडिया. आप उनको फिर ये भी तो बताएं करें क्या. वो बैठ के आपके कॉन्स्टिपेटेड चेहरे देखें जिसमें आप और उनसे ज्यादा दुखी लग रहे हैं. what a ridiculous idea. So I think this perspective should grow. मेरे हिसाब से पैंडेमिक में हमें खुश होना चाहिए कि हम इस दौर में जिंदा हैं. ये दौर, ये याद रखा जाएगा, हम वो जनरेशन है जो बिफोर पेंडेमिक जिंदा थी, और मैं दुआ करता हूं कि आफ्टर पेंडेमिक जिंदा होगी. सो वी हैव सीन दैट. ये पिछले 110 साल 120 साल में ऐसा कुछ नहीं इंसान ने देखा है. दिस इज अनप्रेसिडेंटेड टाइम. दिस इज अ टाइम टू अपग्रेड आवरसेल्व्स. मैं बार बार ये बात कह रहा हूं. दिस इज अ टाइम टू कम इन टर्म्स विथ योर ओन सेल्फ. फराज, आज मैं भी कमेंट्स में भी देख रहा हूं, लोगों को यही तकलीफ है, हम सोशलाइज नहीं कर सक रहे हैं. हम बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये मसला है. मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ. आई मीन आप एटलीस्ट फराज इस पूरे पैनल में आप तो मेरा जॉब जानते ही हैं. रोज हम नए लोगों से मिलते हैं, रोज नया इंटरेक्शन, 25, 30, 40 से 1-2 हजार तक. एंड इट वाज अ डेली रूटीन फॉर मी. सो इट्स नॉट इजी, बट यू नो व्हाट, इट्स टाइम टू मेक योर ओन कंपनी एन इंटरेस्टिंग कंपनी. आप सोचें
और यहाँ जितने लिसनर्स हैं मैं आप सबको कहता हूँ, आप सोचें अगर आज आपको अपने साथ अकेले बैठना पड़ रहा है और आप इतने बोर हो रहे हैं, तो इतने सालों से जो हमें लोग बर्दाश्त कर रहे थे वो कितने बोर हुए होंगे. आई थिंक दिस इज अ टाइम to be interesting. I think this is a time to be conscious. I think it's a time to take charge of our own inner management. दुनिया में लास्ट एक कंक्लूडिंग रिमार्क दूंगा एंड फराज आई कम बैक टू यू. दुनिया कभी भी आपके हिसाब से नहीं होगी 100%. The world will never happen your way, but at least you should happen your way. दुनिया आपके हिसाब से नहीं होती, ये मेरा टेंशन नहीं है भाई. अगर सोचो ना दुनिया डॉक्टर इफत के हिसाब से हो रही है तो मैं कहां जाऊंगा यार, मेरी क्या गलती है. दुनिया कभी भी आपके हिसाब से 100% नहीं होगी, बट आप तो अपने हिसाब से 100% हो. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड मूव अहेड विद. Very nice, excellent. I think that you again brought life to this whole discussion. एंड एक एंड पे मैं सोहेल आपसे क्वेश्चन, मुझे पता है टाइम इज ऑलमोस्ट फिनिशिंग, एक आखिरी सवाल मैं आपसे फिर देन आई विल मूव क्विकली टू डॉक्टर इफत. आपसे सवाल ये है कि इस पेंडेमिक में सोहेल व्हाट होप डू यू सी, because you have already mentioned quite a few points. This is the time to become an entrepreneur, I take that, but then again what else do you see which is actually hopeful? जो इस the people who are in this conversation and they are listening us live, what is it that they can really see and from your perspective the hope? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन फराज. जब ये पैंडेमिक का टाइम हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था ना मार्च में, मैं हर बंदे को सुन रहा था, हर बंदा फेसबुक पे आकर हर एक को मशवरा दे रहा था, पुर उम्मीद रहे. उनको लग रहा था ये कोई 1-2 हफ्ते की कहानी है. और अब वाकई पॉजिटिविटी इज स्ट्रगलिंग. मैं डे 1 से एक बात कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ टाइम टू बी पॉजिटिव, बट वन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक दैट वी विल कम आउट ऑफ इट. नाउ व्हाट इज द गुड साइड? अच्छा, यहाँ पे इरशाद इकबाल साहब ने कहा है कि आई डिसएग्री. मैं सॉरी ये कमेंट पढ़ लिया है और अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया मेरे जाने से पहले. इन्होंने कहा आई डिसएग्री विद सोहेल्स पॉइंट ऑफ गिविंग अनलिमिटेड स्क्रीन टू किड्स. इरशाद आप पूरी रिकॉर्डिंग चेक करके बताना मैंने कब ये कहा था. मैंने ये कभी भी नहीं कहा है. और डॉक्टर आयशा ने भी जब ये बात कही थी तो उन्होंने भी ये नहीं कहा था. उन्होंने तो 2-3 घंटे का स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया था. कोई भी ये नहीं कह रहा अनलिमिटेड टाइम दो. मैंने यहाँ पर और डॉक्टर साहिबा ने भी यही बात कही थी, आप ऑल्टरनेट क्या दे रहे हो उनको? आप सिर्फ ये कहो नहीं स्क्रीन नहीं देखनी है, वंडरफुल आइडिया. आप देखिए ना, मैं आपको एक, आप होटल में गए खाना खाने, आपको किसी ने कहा आपने फिश एंड चिप्स नहीं खानी है. अच्छा, वहां मिलती सिर्फ फिश एंड चिप्स ही है जो अट्रैक्टिव है, आपने वो नहीं खानी है. अच्छा फिर क्या, कुछ भी खा लो. और है क्या, नहीं है कुछ और नहीं, लेकिन फिश एंड चिप्स नहीं खानी. व्हाट अ स्टूपिड आइडिया ऑल टुगेदर. सो व्हेन यू टेल योर चाइल्ड, आर यू इन्वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग बुक्स विद देम? Are you investing time in playing some physical sports with them? Are you investing time in playing some mind games with them? If you are not willing to do that and you are demanding them to leave screen, मैं आज आपको एक और प्रिडिक्शन कर रहा हूं, और डॉक्टर इफत तो हैं टेक बिजनेस में, ये पता नहीं इंडोर्स करेंगी इसको. सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो स्क्रीन है, फिजिकल स्क्रीन जिसे हम रोक रहे हैं. ये जब स्किन के अंदर चली गई ना टेक्नोलॉजी, फिर मैं देखता हूं स्क्रीन कौन रोकता है. योर आईज विल बिकम स्क्रीन. व्हाट आर वी थिंकिंग? वी आर नॉट एम्ब्रेसिंग द एडवेंट ऑफ एआई, and this is going to be extremely painful for us. So I appreciate you making this point. Never did I said. And I think it's very important. मैं नहीं कह रहा उसको हर वक्त स्क्रीन दे दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स दो, ऑल्टरनेट्स दो. इसमें कोई अक्ल नहीं लगती ये नहीं करो, अक्ल इसमें लगती है ये करो. सो सॉरी मैंने अपना सारा टाइम फराज उनको रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि वो एक गलत परसेप्शन लेके चले गए. प्लीज डॉक्टर आयशा. Can I add something to it? Just yes. Okay. So I completely second Mr. Suhail कि अभी जिस again situation बहुत different थी हमारे टाइम पे. अब जहाँ पे दुनिया जा रही है, बच्चों को स्क्रीन ना देना या उनको डिजिटल या टेक सेवी ना बनाना is actually to me personally is criminal, because आगे जाके सारी जो competencies हैं, जहाँ पे वो जॉब पे जाएंगे वो उनसे ये पूछेंगे कि आपके पास ये competencies हैं कि नहीं है. And if we are being old school in a certain way and not giving them this opportunity, तो हम उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं. हम इनफैक्ट उनको हैंडीकैप कर रहे हैं आगे जाके दुनिया में को फेस करने के लिए.
so that is one bit. But then जो unlimited screen time की बात है, वो तो absolutely it's completely not, even no one would recommend that, चाहे कुछ भी हो जाए. But then we have to be very mindful of the fact कि हम उनसे लेके क्या कर रहे हैं. और like again, that's very very nicely put by Mr. Suhail, जो भी उन्होंने example दिया कि वो आपको फिर देखें, unless you're very willing to engage with them in a very productive way, why not? But वो करना जरूरी है. So Very interesting. So I think again, Dr. Aisha, thank you very much. You added, I mean, further clarity on this point. जो सुहेल बड़े ही, I would say कि बड़े interesting अंदाज में उन्होंने handle किया इस बात को जो question आया था. So again, सुहेल, आपने हमें hope भी दी है. You have talked about, that how we can really make sure that this pandemic becomes an opportunity for us. इसी बात पे अगर मैं, if I can again hear from you, Suhail, that hope के point of view से बच्चों के हवाले से हमने बात की, for I would say professionals working in organizations, do you see any hope? Because constantly एक ये भी है कि ठीक है, work from home is there and it is now it's here, और जब हम ऐसे लोग हैं कि जब हमारे सर पे पड़ती है तो हम करते हैं, all of that is fine. But then again, do you feel there's a lurking fear that we want to go back to our old habits? Because I think habits जो हैं, they play a very important role, and I was seeing in the questions as well. एक बल्कि comment बड़ा interesting आया है, वो ये है कि corporates ने जो है वो psychiatrist की services और psychologist की services जो हैं उनको जो है वो ensure किया है, and many employees are availing that. I think it's a great comment, and I think it's a great practice. Do you see that such practices are going to help us deal with this pandemic? यस फराज, एंड ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. अभी मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है भाई. सबने डॉक्टर्स रखे हुए थे ना, ईएनटी रख लेते हैं हम. हमें दिमाग से नफरत है कुछ, शायद मुझे लगता है. ईएनटी के पास जाने में कोई शर्म नहीं आती हमको, लेकिन अगर हमें किसी साइकेट्रिक के पास जाना पड़े या साइकोलॉजिस्ट, तो ओहो बहुत ही कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गया. आई थिंक वी नीड टू ग्रो अप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसको मैं एक पर्सपेक्टिव सर्विस पे ऐड करूं. देखो, ये सारी सर्विसेज, if it's a corporate sugar and a corporate selling pitch, no faida. But if it's something that is being done consciously with absolute love and care for people that we are trying to work with and people that we are trying to serve, I think this is a revolutionary step. बहुत सारे लोग फराज हमारी फ्रेटर्निटी में, इवन एचआर फ्रेटर्निटी में ऐसे हैं जो अब तक बैठे हुए, ये इंशाल्लाह खुल जाए, सब नॉर्मल हो जाए, फिर बताएंगे सर ये दोबारा से नॉर्मल नहीं होने लगा. दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल. यू बेटर अडैप्ट इट or be history. We can't do much. The world never became the same after the Second World War. We need to understand this. The world never became the same after even 9/11, and 9/11 is hardly 10% of what we are going through right now. How are you expecting the world to be same? It will not be same. But persistence, capability, and space to enhance perspective, space to listen more, space to see more, space to embrace technology rather than ये जो हमारी deep rooted technology से लेकर कोई खास एक नफरत सी बनी हुई है. How we can embrace it, channelize it. मैं repeat करूंगा comment. Embrace technology before it gets into your skin. And once this technology gets into your skin, your individual freedom will also be challenged. Imagine कैसा लग रहा हो इस वक्त अभी हम यहाँ सुन रहे हैं, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे पास एक मीटर हो जो हमें बताए कि जितने लोग सुन रहे हैं इसमें से इतने % लोगों को मजा आ रहा है. अगर आपको लग रहा है ना कि मैं यहाँ पे कोई बहुत बहकी बातें कर रहा हूँ, just give technology another 10-20 years, they'll show you what's happening. So I think it's a time, जो डॉक्टर आयशा ने कहा, it's a time to embrace technology, but do it mindfully. ये नहीं कि आपने मतलब अपने आप को सौंप दिया. Technology should facilitate you. You should not be facilitating technology. That's important. Very interesting. I think Suhail, again, ये जो सारी discussion है इसके अंदर मेरा ख्याल है कि आपने ensure किया है participants को कि वो इस चीज पे नजर रखें कि ये जो सूरत हाल है, it's not going to be the same.
and change is already here. Now the question is that how professionally and how, let's say, open-mindedly we embrace this change. वो कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ गई है, तो ये वो तब्दीली है जो जब जाएगी नहीं. So I think this is going to stay here forever. So isme again, I'll go back to Dr. Rifat quickly, and Sohail, then if you allow me, I would definitely like to come back to you if you can really stay with us for a few more minutes. But yeah, so I think Dr. Rifat, I would like to know, क्योंकि काफी सारे मैं देख रहा हूँ comments आ रहे हैं, questions आ रहे हैं, your perspective on the entrepreneur's life these days. What hope do you see as an entrepreneur specifically? Because I'm sure बहुत सारे जो यहाँ पे live participants हैं वो इसको देख रहे होंगे. And what is your message of hope for them? What they should look forward to in future? I think जहाँ ना उम्मीदी होती है वहाँ उम्मीद तो definitely साथ साथ होती है. और जब आप एक पेंडेमिक में होते हैं, आपको इस सिचुएशन में इस वक्त आई थिंक हम सबको एक मौका मिल रहा है पर्सपेक्टिव लेने का कि हम खुद करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में. आई थिंक हम सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप से बात करने की, या अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों से, उन लोगों से बात करने की जो आम जिंदगी में हमें नहीं मिलती. और मुझे ऐसा लगता है हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया शायद यही है कि हम बात नहीं करते. अगर आप घर में कभी डिस्कशंस लोगों की सुने, फैमिली मेम्बर्स की, तो हम हर तरह की बात कर लेंगे. हम बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस महीने पैसे बचाने, अगले महीने नहीं बचाने, वॉट एवर, फला चीज़ खरीदनी है. बट वो चीज़ें जो हमें ज़िंदगी में रियली बहुत मैटर करती हैं, या वो चीज़ें जिनके बारे में हम बहुत पैशनेट हैं, या कुछ अगर हम एम्बिशन रखते हैं ज़िंदगी में, या कोई चीज़ जो हमें बहुत हर्ट की है, ये वो चीज़ें जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम बात नहीं करते. और हम अपने आप से तो बिल्कुल ही बात नहीं करते. सो वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड और रियलाइज कि हम करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, हमें क्या पसंद है ज़िंदगी में, हमें क्या नहीं पसंद. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एवरीवन टू रियली अंडरस्टैंड maybe their entrepreneurial germs, I would say. तो बहुत सारे लोग हैं जो शायद कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे होंगे. एंड बाय द वे सोहेल साहब, मैं आपने जिक्र किया कि मैं स्टार्टअप चलाती हूँ, और मैं अगर फार्मा में होती तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं कभी फार्मा में होती थी इससे पहले. सो आई कम्प्लीटली एग्री टू योर पॉइंट कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. और बहुत सारे लोग ये एम्बिशन रखते हैं कि हम अपना स्टार्टअप बनाएं, अपनी कंपनी बनाएं, खुद एंटरप्रेन्योर्स बने. सो मे बी दिस इज द राइट टाइम टू रियली अंडरस्टैंड कि आप करना क्या चाहते हैं, आप अपने आप से क्या चाहते हैं. आई थिंक हम अपनी जिंदगी का कैथारसिस नहीं करते, और हम नहीं सोचते कि हम अपने आप को अगले 5 साल 10 सालों में किधर देखेंगे. और हम अपनी डे टू डे ड्रिल में इतने मसरूफ होते हैं, वी जस्ट डोंट रियलाइज वन डे लाइफ एंड्स. तो ये बड़ा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना मेरे ख्याल से अपने आप को, कि जी मैं अपने आप को 5 साल 10 सालों में कहाँ देखता हूँ या कहाँ देखती हूँ, और मुझे क्या लगता है, मैं क्या करना चाहती हूँ. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रियली अंडरस्टैंड एंड सी के अगर आप बहुत डिफरेंट होप्स रखते हैं उन चीज़ों से जो आप आज कर रहे हैं, तो मे बी टुडे इज़ द राइट टाइम टू रियली स्टेप बैक and start doing something which you can definitely do. So for me, hope as an entrepreneur is this. And I think यहाँ मैं एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी. यहाँ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि, और बता भी रहे हैं कि अब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स या साइकाइट्रिस्ट उनके कंपनीज में रख ली हैं. तो सेहत कहानी भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज देता है, और वो सारे लोग जो अगर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, आप मैं ज़रूर ये कहूँगी कि लोग एक्सेस कर सकते हैं. और इस वक्त मैं आपको अपना पर्सनल स्टोरी अगर शेयर करूँ, हमारे पास सुइसाइडल केसेस आए हैं, हमारे पास वो लोग आए हैं जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार रही हैं. कौन सी, मैं आई कांट रियली नेम ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, वो अमराज या वो मसाइल जो इस वक्त निकल कर सामने आए हैं. तो आई थिंक ये बेस्ट वक्त है, ये वो टाइम है कि आप अवेल करें वो सर्विसेज जो आप डिजिटल मीडिया के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी सेहत का डेफिनेटली ख्याल रखें. एज एन एंटरप्रेन्योर आप अंडरस्टैंड करें कि आपके क्या होप्स हैं, आप ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं. एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, this is actually the beginning of a different era altogether. Thank you very much, Dr. Rifat. I think you actually really gave us a new perspective. It's very hopeful to know the entrepreneurs के perspective से
जिस तरह से आप बता रही हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं फॉर साइकाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स एंड आई वुड से कोचिंग, सोहेल, सो कमिंग बैक टू यू सोहेल वेरी क्विकली, मेरा ख्याल है कि जिस तरह से डॉक्टर इफ़त ने बात की काउंसलिंग सर्विसेज की, साइकाट्रिक सर्विसेज की, सोहेल व्हाट डू यू थिंक फॉर प्रोफेशनल्स, कोचिंग जो है वो कितनी रेलेवेंट है इस पेंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में और फ्यूचर में? कोचिंग तो आई थिंक कोचिंग पहले भी जरूरी थी, लेकिन आज कोचिंग के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कोच को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोच भी इतने ही वाफिर मिकदार में मिलते हैं जितनी वाफिर मिकदार में वो लोग जिन्हें कोचिंग की जरूरत है। So I think to put it in a perspective, I think coaching is a very important personal development tool. However, we should not approach coaching as yet another corporate fashion. Coaching should be an individual exercise. Coaching should be where an individual feels that I need help, where an individual steps forward, when an individual takes the decision that I need to improve myself, I need to change perspective, I need to move ahead in a new direction of performance. I think Sohail's voice is maybe not there and his screen is stuck. Sohail, if you can hear me, maybe you can get back to us again. And am I audible now? You are audible to us. Maybe Fraz, there is a problem at your end. Okay, so I can I continue, Shoaib? Sir, can I continue? Yeah. Yeah, so, sure, please. Thank you. So I think this is a time where we should embrace coaching, as I said, not just as another corporate fed. Dr. Ifat, thank you for bringing up this service of Sehat Kahani, where the access to the counseling services is available, and who knows it more than you? You have the numbers, the way it's on a rise. At least, Doctor, I'm sure you'll agree कि ये इससे एक चीज अच्छी ये हुई कि now we are willingly talking about these challenges. वरना ये पहले तो एक ऐसा taboo था जिसके ऊपर बात नहीं हो सकती थी. And Khalid Saab, that you are here, because these are, as I understand, these are all concluding remarks that I'm making, and we all will make. But I was so happy when I got the invitation from ICAP to talk on stress. It was like a dream come true. I was like, wow, that's what we need. We need to talk about stress from finance people and audit people. Why not? This is so important. So I would thank you for realizing that this is not something which should be dedicated to HR function or some other function. This is a people's function, and we all need to embrace this thing. We need to have that right level of help in our organization. And if we are doing that, and I think with institutions like Sehat Kahani and many other which are there now, I think it's a great time to be in. Only if we can, swim through this little bit of turbulence, we will, inshallah, come out as better person, a person with better perspective, a person with better resilience to life. Fraz, I think, are you there, Fraz? I think we've lost him again. Sohail, we are extremely grateful. I think we have overstretched your generosity on time, and extremely grateful. Although we'll be concluding the session in the next 5 or 10 minutes, you're most welcome to stay on. But if you have another commitment, we will let you leave. Thank you. So we are extremely grateful for a very, very interesting conversation. As you must have seen from the comments, that your words have been appreciated. New thinking, new ideas, and that's what we need. We need to be positive with whatever we are doing, and I think it's all the mindset. And the mindset has to be good, and the mindset should be something which should be encouraging and looking for something good to happen. So Sohail, your choice to leave or to remain with us. So over to you, Shoaib.
since Thank you you, sir. are you're supposed to take over in case the moderator Yes, we sir. lose the moderator. So over to you. Yes, sir. Thank you so much to Mr. Faraz and all the esteemed panelists. I had to ask few questions from Mr. Faraz. So I think if he's not there, if we have dropped him, so I can ask the question to Suhail. Suhail, are you there? I have one question for you that I was supposed to ask from Mr. Faraz. I was almost आज leaving, but I'll quickly answer that. Okay, yeah, I need quick answer. आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम का फिनोमेना चल गया है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो ये कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस का बाइस बन रहा है, कुछ लोग बहुत खुश हैं. आपके ख्याल में क्या है ये, किस तरह ये स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? What is the benefit of it? Let's be, I think, let's be straight about it. Because we have never done this, we don't know how to do it. We are learning, and we will learn it. I mean, I think this will be very unfair to say. I think we dropped him. Hello? Suhail? Hello? Shoaib, I think you've lost him. So I think I lost him. So, sir, we will proceed now. I think, viewers, I would like to inform you. I would like to thank our panelists, and I would like to thank the whole team over here. And I would especially thank to Mr. Faraz, who unfortunately disconnected. I would like to also thank Mr. Suhail Zindani, Dr. Iffa, Dr. Aisha. Thank you so much. Viewers, I would like to inform you that we have a next webinar on in a next Friday on 10th of July on a pharma industry. So please do register for that. I will be sharing the poll results and the viewership data very soon in a minute. So I would like us to give concluding remarks, and then I will, after giving the whole a thank you note, and then we can conclude it. Faraz has joined us, so maybe Yes. you would like to hand over to Faraz. Let me ask a very quick question to him, sir. Yeah, please go ahead. I'm here. Sure. My apologies, I got disconnected. No worries, no worries. So please quickly answer me. Nowadays, work from home and work from anywhere has become a phenomenon word, a buzzword. So is it accelerating the stress or is it reducing it? What is your opinion about it? Okay, I think very interestingly, if you were already reading comments from participants as well, there was one very interesting comment, and that was like, even this webinar is happening after office hours. And when we actually, in the daytime, we are busy in one room or the other. And our kids, of course, are like, maybe they are studying in another room, internet, and their screens and everything. But this I would say, because of the work from home specifically, we see that there's no balance, work-life balance. That's absolutely, I would say, the thing of the past. So my answer, or let's say my response to your question, I think we have lost him again. So now I will give the viewership data. Till 9 p.m. We have 4K reach and 4K views with 1.5K engagements. So I think that's a very good figure, and it shows that people were interested in listening. So to give you a brief of the poll results. Our first question of the poll was, what is the main cause of stress? So the question that has taken it over is 30%, general uncertainty about the future. The second question was, which place generates the most stress for you? And it has been won by 31% workplace. So here we go. Our third question was, I'm really sorry, it's 39% external environment. Our third question was, does our corporate culture recognize stress as an issue? And the answer is not at all, with 31%. Then we have our fourth question was, which strategy do you adopt for managing stress? And it turns out that people turn to religion and prayers with 33%. Our fifth question was, in our opinion, what is the impact of COVID on productivity? So 60% somewhat adverse.
Then our second question, then our seventh question was, do you think stress can be effectively managed? And 57% says that only to a certain limit. And lastly, and most importantly, does work from home create more stress than working from office? So 45% say yes to a certain degree. So this is the poll result, and we have all seen the data. So I would like to thank, first of all, I would like to thank Mr. Khalid Rahman, Chairman PIBC, who provided me continued guidance and leadership while preparing for this webinar. I would also like to thank our panelists, Suhail Zindani, Dr. Aisha, Dr. Ifat. They were phenomenal. They did a very great job over here. I would also like to thank Mr. Faraz Aslam, moderator. He did a great job over here. Lastly, I would like to say that the whole ICAP team, the IT team, Amber, the marketing teams, and everyone, they contributed amazingly. And that's why we are having a very good webinar here. So before I give my thanks to everyone, I would like to give you, we were talking about Sehat Kahani. It is a health portal. And if anyone wants to, talk about it, if anyone wants to, further see and evaluate what is this stress, so they can contact with us. There are so many people who are offering services now. There's also a very good website that I recently came across, taskin.org. It has very good small videos, and it's in Urdu, so you can easily understand it. And they are, rightly addressing all the issues that is related to with the stress. So thank you so much. I would like to finish my remarks with that. Iqbal said, "Naho nomeed ke nomeedi hai zawale ilmo irfan. Naho nomeed ke nomeedi hai zawale ilmo irfan. Ke umeed hai marde momin ke liye khuda ke rastanon mein se." And it is also said that it is not the stress that kills us, it is the way how we react to it. So thank you so much. Over to you, Khalid Rahman sir. Thank you so much. Thank you, Shoaib. You've done an excellent job. You've done the thank yous. I wouldn't like to hold on the conversation any longer. I've thanked everybody. Dr. Aisha, you are holding on till the end. We are extremely grateful. And we have rest of the panelists, somehow they've left us, but Dr. Aisha is still with us. Thank you, everybody, and thank you, Shoaib. So God bless you all. Good night and Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. Take care. Thank you. Thank you.